Good morning to all. So today we are going to discuss about the anther and discuss about the microsporogenesis. In the last class, we are going to discuss about the anther in detail and discuss about its structure, function. So today we are going to discuss about the structure of the anther. So let's start. So the structure of in the last class also discuss about the structure of anther. The anther structure is somehow look like this, and it contain following parts: the anther chamber and the filament and connective. Suppose this is an anther, this is an filament, and it is connective. I show you the diagram actually. So this is a diagram which will indicate this is a anther, this is anther chamber, and this is the connective, and this is filament. This is present in a flower. So I draw the flower structure so it can betterly understand where the anther is present actually. This is a flower and bisexual flower. I am drawing the bisexual flower structure. Online class. Hmm. So today we are going to discuss about the anther structure and all the detail. So this is a stigma, this is the style, and it is ovary, and this is the anther. So look at here. So we are drawing the diagram of the flower structure within which we found that different components are present. Means the anther is present, the stigma, style, and ovary. This is the female part, and this is the male part. This the anther part is the male part. So we are going to discuss about all in detail about the anther structure today. So let's start. And I request to all the students who are come to the video chat so that we can discuss in detail about the anther. So the anther contain the pollen grain, and today we are going to discuss about microsporogenesis. Microsporogenesis means the formation of anther, right? So this is the process in which each microspore mother cell divide meiotically to form four microspore cells. So each microspore mother cell means these are the pollen grain which are present within the anther. These pollen grain to be divided. So each pollen grain is going to be divided. Suppose this is a pollen grain. It is going to be divided to produce right. So look at here. So I'm drawing this is a pollen grain which is present within the anther chamber. Now this pollen grain is going to be divided two successive division from here. One successive division to produce two pollen grain or two pollen gametes, and these two pollen grain again successively divide to produce four pollen grain. So this is a process. This is the process actually within which we are going to discuss the microsporogenesis. So in microsporogenesis, we are going to discuss that in microsporogenesis, each pollen grain is going to be divided to produce whole pollen grain. I request to all the students who are waiting for the class, please come to the class because we are already started the class. For joining in my class, let's say hi to.
so I can understand that you are joining. Right. So in my class, we are going to discuss about the microsporogenesis and anther structure. Today we are going to today topic is the anther structure and discussion about the microsporogenesis. Microsporogenesis means one pollen grain or microspore is going to divide to produce four microspore. Means one pollen grain is going to divide or one microspore. This is a process actually. This is a process in which we are discussed that one microspore is going to divide to produce four microspore. So this is all about the microsporogenesis. Within microsporogenesis, I draw the diagram here that within the anther chamber, this is a anther, this is a anther, which it is a big picture of the anther structure. Here, this is actual flower. If you observe this flower contain the male as well as female part. This is the male part. This anther filament connective containing part is male part, and the stigma style ovary it is the female part. So the male part contain the anther part contain the pollen grain, means the anther containing, this is actually anther, it is the filament. The stick like structure which is attached to the anther is called as filament, and the joining point is called as connective. So this anther contain the pollen grain, and this pollen grain is going to be divided by successive two division to produce four microspore. So this is the process within which we discuss the microsporogenesis is takes place. Means microsporogenesis means production of four haploid microspore. Four haploid microspore. This is the n number of microspore. N number containing gametes or microspore, whatever you can say. Right. So I'm waiting for you all who are interested to join my class. Come to my class because the class is already started. And now discussing about the structure, how this is takes place. Means the division is takes place by two way. One is successive type, means the microspore is going to divide by two way. Means one is successive type, another is simultaneous type. I draw the diagram here. Now I'm representing all the detail. So this is suppose a microspore, and this microspore is divided in two way. One is successive type, and another is simultaneous type. Simultaneous type. The successive, I'll draw the diagram and show you in the later. So in successive type, there is two division is takes place. There is two division is takes place. First and second. This is meiosis 1 and meiosis 2. And then each one going to divide to produce four haploid gametes. I show you the detail. Just wait. I'm drawing the diagram in my copy. In simultaneous type, cytokinesis takes place. Repeated nuclear division is takes place, but there is no cell division. Cell division is takes place at the end of the nuclear division. So we can get four haploid gametes at the end of the cytokinesis. So look at here the diagram. I'm drawing the pollen grain division. This is a pollen grain actually. This is a pollen grain. This pollen grain is divided, means we are going to discuss about microsporogenesis. So microsporogenesis means it is the division of pollen grain or microspore. Pollen grain or microspore. So this is a microspore, or you can say pollen grain. Whatever. Microspore or pollen grain. This microspore is divided by two processes. One is successive type, another is simultaneous type. One is successive type, another is simultaneous type. So in successive type of nuclear division, what happened? The pollen grain containing only one nuclei at first initially. This nuclei is going to divide to produce two nuclei.
two nuclei. After that, there is cell wall formation it takes place at the middle, but these two nuclei present in two different chamber of the two different cell, but still they are joining to each other from a common wall. After that, a second division takes place. So these each nuclei of the two chamber of the cell are going to divide, each nuclei divide to produce two, again two, each one produce two, means this nuclei divide, suppose I am drawing here, so this single nuclei divide to produce two nuclei, this one produce divide to produce two. So there is four haploid gametes or four haploid gamete cell are produced, right? So this is called successive type of cell division, and another is simultaneous type. So in simultaneous type of cell division, in simultaneous of type, hello, syllabus, okay, syllabus ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, बट डोंट वरी सेटा पर डिस्कशन करवा, आगे डिस्कशन पढ़ाटा सरी जाऊ, देन तापर आम डिस्कशन करवा कौन केमती के सिलेबस पाइबो कौन करिवो, तो डिटेल आम से डिस्कशन करवा, से लास्ट को चार्ट रे लिखिबो, अब लिखु था जहाँ भी डाउट अच्छे मुझे लास्ट को रिप्लाई करी सब किसी जार जोटा डाउट अच्छे से लास्ट रे मुझे रिप्लाई करी जार जोटा ऑप्शन अच्छे। तो आज जो टॉपिकटा अच्छी तुम एंथर मु पूर्वर टे जो मैंने आसी ना आउ टे रिपीट कर दो से जिनसटा को टे बेटरली बुझापी। तो मु भावुँ आज देखा जाऊँ बोधे समस्त को, भावुँ बोधे देखा कि मेंशन कर दियो जे देखा जाऊँ कि नहीं, खाली क्लियरली मुझे जहाँ खाते ड्र कर देखा जाऊँ कि नहीं, मो फेस ठीक से देखा जाऊँ कि नहीं, टिके खाली मेंशन करो यस बोली लिखले मैं जानिबी जे हां तुमको समस्त को देखा होची बोले, जे देखा जाउची तले टिके खाली मेंशन करो, देन हमें क्लास स्टार्ट प्रोसीड करबा। देखा जाउची बोले आई थिंक, अच्छा देखो दिस इज ए फ्लावर स्ट्रक्चर, मुझे गोटे फुलर स्ट्रक्चर करछि बा फ्लावर स्ट्रक्चर टे, फ्लावर रे कोन होइछि ना विभिन्न पार्ट अछि, गोटे मेल पार्ट गोटे फीमेल पार्ट, मेल पार्ट टा कहउछन एंथर फिलामेंट कनेक्टिव, ए जे एंथर टा ए पार्ट जे साइड रे बाछि, एटा गोटे बाइसेक्सुअल फ्लावर माने मेल फीमेल दी रक सेक्स ऑर्गन रहिछि। तो फिगर टा मु खाता रे ड्रा करछि इन माय कॉपी, देखा गला बोधे बे, क्लोजर टी कली देखा देखा जे मेंशन कर दे टी। देखो ये फ्लावर टा मुझे डिस्कशन करते फ्लावर स्ट्रक्चर विषय। देखो आज पढ़ुचे आम टॉपिक अच्छी एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टॉपिक टा भल से सुनी रख, लेखि रख, खाता कलम टे रखिले तुम बेटर बुझी पारे जे कौन पढ़ाला आज कौन लिखाला, टे खाता पेन धरी बस टे जान जे आज कौन पढ़ा हो। आज पढ़ा हो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक एटा आज डिस्कशन हो आज टॉपिक होची, बार बार कहूची जे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सेतरे हम डिस्कस करबा आगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विषय, काली हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विषय डिस्कशन करते टिके मु ऊपर तळ पाट टिके कहउतले। तो आज सी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड तब टिके देखिनी एटा गोटे फ्लावर स्ट्रक्चर, दिस इज ए फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर रे गोटे मेल पार्ट भी अछि जो बाहर ची साइड को, गोटे मझी ऊपर पूरा स्ट्रेट जाई छि सेटा होची फीमेल पार्टटा, फीमेल पार्टटा रे अछि स्टिग्मा स्टाइल ओवारी अछि, आ मेल पार्टटा रे अछि एटी एंथर अछि, आ ता तळको जो सुतार गमते बाहरी का सेड को जोडी की एंथर को लागि सेटा होची फिलामेंट कोन। से जिनसटा एटी जूम करके एठी ए साइड रे एठी हमर एठी एठी देखै छि, एटा को एटा देखो गोटे एंथर स्ट्रक्चर, काने हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढिबा ना, तो एटा गोटे एंथर स्ट्रक्चर। सो ए एंथर स्ट्रक्चर को देखो बोलसे मुझे पेन मारछि, एटा गोटे एंथर चेंबर टे, एटा होची एंथर चेंबर टा, ए चेंबर रे पोलन ग्रेन माने रहिछन, कोन रहिछन पोलन ग्रेन रहिछन, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहंती बा माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन कहंती ताको हला। तो सेही एंथर स्ट्रक्चर देखिबा जदी एंथर टा काहा का को नै गठित ना, गोटे एंथर चेंबर, एटा होची एंथर चेंबर जोतरे कि पोलन ग्रेन रहे,
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଠିର ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଲାମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଏନିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ କନେକ୍ଟିଭ କହନ୍ତି। ଏନ୍ଥର କହନ୍ତି, ଏନ୍ଥର ଭିତରେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର କହନ୍ତି। ଏନ୍ଥର ଚେମ୍ବର କୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ କହନ୍ତି ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର କହନ୍ତି। ତାର ଜଏନିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏନ୍ଥର ଆଉ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିକ୍ ଟା ବାହାରିଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଲାମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଏନିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ କନେକ୍ଟିଭ କହନ୍ତି। ଠିକ, ତ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏନ୍ଥର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ କରୁଛେ ତାର ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍। ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ମିନ୍ସ production of 4 haploid gametes or microspore or pollen grain, ଚାରିଟା haploid pollen grain ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ pollen grain ଗୁଡିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦେଖା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର repeated division ହେବ। repeated division ହେବ ମାନେ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଟାକୁ ଦେଖିବ କେମିତି division ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିଛି, ତ এইটা হচ্ছে দেখো এইটা যে হচ্ছে এটা গোটে হচ্ছে মাইক্রোস্পোর বা পলেন গ্রেন, এটা কହୁଛି মাইক্রোস্পোর বা পলেন গ্রেন। এই মাইক্রোস্পোর বা পলেন গ্রেন ইয়ার দুইরক ডিভিজন ହୁଏ বা মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস বা পলেন গ্রেন ডিভিজনটা দুই প্রকার ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଇ ସକ୍ସେସିଭ ଟାଇପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଟାଇପ। ଦୁଇ ରକ ପଲେନ ଗ୍ରେନ ର ଡିଭିଜନ ହୁଏ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଡିଭିଜନ ହୁଏ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ହୁଏ। ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ଯେ ପଢିବା ସେଟା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ 4 haploid microspore or pollen grain by successive division of a single pollen grain। ଗୋଟେ pollen grain ର single pollen grain ଅଛି, ତାର successive ইয়াର ଯୋଉ successive division ହବ କେତେ ଦୁଇ ରକମ ମେଥଡ ର ହବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମଟା ଉପରେ ଅଛି successive type ଆଉ ତଳେ ଅଛି simultaneous type, successive simultaneous। ତ successive type ରେ ଦେଖିବା, successive type ରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ single pollen grain ଟା ଥିଲା ତାର division ହେଲା ପରେ ଦିଟା pollen grain ସୃଷ୍ଟି ମାନେ pollen nuclei ହେଲା। ସେ pollen grain ତ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ରୁ ଡବଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ହେଲା। ଡବଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦିଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଦିଟା ସେପାରେଟ ହେଇଯିବେ ଦି ସାଇଡ କୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମନ ପାର୍ଟିସନ ୱାଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଟା ହେଇଗଲା ଦିଟା ସେଲ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ ୱାଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଡିକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଇଚ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଡିଭିଜନ ହବ, ଇଏ ଡିଭିଜନ ବି ହବ, ଇଏ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଡିଭିଜନ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଦି ଥରେ ଲେଖା ଡିଭିଜନ ହେଲେ ତେଣୁକରି ଥରେ ଡିଭିଜନ ହେଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଥରେ ହେଇଗଲେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ କେତେଟା ଚାରିଟା। ये न्यूक्लियर थर डिवीजन है कि दीटा करिवो, ए न्यूक्लियर डिवीजन करी दीटा करिवो, टोटल हे जिवे चारटा। तो एई प्रकार जदी डिवीजन हला पोलन ग्रेन रो न्यूक्लियर जदी एई भली भाबरे डिवीजन है कि चारटा हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन हले, एटा को कोन कहले हमें सक्सेसिव टाइप। ताको कोन कहले हमें सक्सेसिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बा सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन। तापर आसिला साइमल्टेनियस टाइप, एटा अछि देखो साइमल्टेनियस टाइप। तो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन सेई पोलन ग्रेन आउ गोटे मेथड रे हुए ताको कहबा साइमल्टेनियस। सेतले कोन हबो ना थरे डिवीजन हला परे सक्सेसिव डिवीजन हला परे थरे गोटे पोलन न्यूक्लियर थरे डिवीजन है कि दीटा न्यूक्लियर हला परे सेल वॉल फॉर्मेशन बा पार्टीशन वॉल कॉमन किछि फॉर्मेशन होने, एटी केवल दीटा न्यूक्लियर होछि। पुनी से दीटा न्यूक्लियर पुनी ईच वन डिवीजन है कि पुनी केटा न्यूक्लियर होछि चारटा न्यूक्लियर होछि। ताने गोटे सेल बा गोटे चेंबर भितर हम कहबा चारटा न्यूक्लियर हे साला परे 4 न्यूक्लियर स्टेज हला परे तापर देखि तांकर साइटोकाइनेसिस बा सेल वॉल फॉर्मेशन आरंभ होइते। जे एटा ए प्रकार हेले राको कहबा हमें साइमल्टेनियस टाइप। बुझी होछि। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रे प्रोडक्शन हुए चारिटा हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन होछि। सेटा को मेथड रे होछि ना सक्सेसिव टाइप रे होबो बा साइमल्टेनियस टाइप रे होबो। सक्सेसिव टाइप रे जदी हला सेटा को प्रथमे तार न्यूक्लियर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हे साला परे तार कोन होछि न वॉल फॉर्मेशन ही जाउछि, कॉमन वॉल फॉर्मेशन होछि, तापर पुनी इज न्यूक्लियर डिवीजन है कि चारटा गैमेट तैयारी करछन। किंतु साइमल्टेनियस टाइप रे केवल थरे डिवीजन हला परे पुनी आउ थरे डिवीजन हला परे माने दुईटा सक्सेसिव डिवीजन हला परे तापर सेल वॉल फॉर्मेशन होछि। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आउ कोन कहार डाउट अछि बे डिस्कशन करिवा। टॉपिक कवर करि दै जेटा गोटे छोटो टॉपिक ते थिला। तो कोन डाउट अछि लेखि परबे चैट रे, तुम कोन मेंशन करिवो कोन कुछु को तार चार जन जोड़ीच आ बाकी कहांती मु सेठी के जानि पर नै। मु भाबुची जे आउ टिके समस्त को इन्फॉर्म करले भलो होंता। ओनली 4 जन ही आछो, 5 जन थिलो तबरे देखुची 4 जन अछो। ए तो माने मेंशन करि पारो तमने कोन डाउट अछि, किछि क्वेश्चन भी पचारि पारो तुम कोन। आ सिलेबस टा हां रहला सिलेबस टा। तो सिलेबस टा तुम केमति पाइबो कोथले सिलेबस टा काहर जदि मेल आईडी दबो मु ताको
मेल आईडी रे हबनी काहाको देखियो के गोटे पिला हेले मु तो गोटे फोटो पठेइ दियंते कोन करिया सिलेबस टा के गोटे तुम भीतर आदित्य के गोटे आसी गले भी एपटे सिलेबस टिके नहीं जानतो कि सत्य का जदि एटी पाखरे राढ़ घर तंगर से जदि आसिक नहीं जिवे आसिक फोटो उठेई के नहीं गले देखि तापर समस्त शेयर करते आजिकार क्लास तुम सरल नेक्स्ट फास्ट आसी 12 रे तो तो देख तुम माने टिके सिलेबस केमती कोन आज टॉपिक टा थिला आज छोटो टॉपिक टा थिला बाकी समस्त को टिके इन्फॉर्म कले बेटर हबो फिगर देखा होनी तो कौन करिया देखा देखि मु जूम ऐप रे पढेबी सेतले ये टाइम रे देखियो हला मु जूम ऐप रे पढेबी ना केतले गुटे डिस्कशन करी से विषय रे सेतले देखियो ठीक अछि फिगर टा देखा जाउनी देखा ता प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करबा किछु गुटे करबा आज के क्लास रे एतिकी थिला 4 जन जॉइन थिला तनको टिके ट्राई करो टिके बेसी मात्रा जॉइन करिया पे जति के अछंती समते भाबू जी आज के क्लास शॉर्ट क्लास थिला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ सिलेबस टा जे नवा को चाहिबो ए सिलेबस टा तो सिलेबस तो माने के उडे आसी कि नै जीवो मो पाखरु सत्य का कोटे पठे दो से नहीं गलो फोटोटा उठे समस्त को मेंशन करो मोबाइल तो स्मार्टफोन नहीं नले मु तुमको व्हाट्सएप माध्यम रे पढ़े तांती बेटर हे तांता आउटी सब बेटर होची व्हाट्सएप जहाँ शुणी मु जाननी कौन ठीक से व्हाट्सएप रे सब माने सर माने पढ़ौछन आजकल हो आज एंड करूची स्ट्रीम टाको नेक्स्ट देखियो कौन होची